अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई एम बैक आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज। तो यस, बात होगी, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं करने के लिए। देयर मेनी स्टोरीज एंड अपडेट्स राइट नाउ। उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। PSL 8 की जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा को मैं खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर से। वेलकम बैक। आई होप यू हैड अ वेरी गुड वेकेशन और आप बिल्कुल एकदम ताज़ा दम और रिफ्रेश का बटन F5 दबा के आ गई होंगी पाकिस्तान वापस। कंप्लीटली F5 जो है वो दबाकर मैं आ गई हूँ, टोटली रिफ्रेश, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। यस, अब मैं वापस आ रही हूँ जरा। नहीं, वो डिस्कनेक्शन वैसे इतना बुरा नहीं था जो हालात चल रहे हैं इस वक्त। कोई से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है, लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं। As always, let's kickstart our program with what's up in sports and for one more time over to Sawera। बिल्कुल जी, अच्छी खबर की जहां आपने बात की तो अच्छी खबर यहां जरूर आ रही है क्योंकि ICC ने जो है वो अपनी नई वनडे रैंकिंग जो है वो ले आए हैं सामने। और जब नई वनडे रैंकिंग की मैं बात करती हूँ तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पे बरकरार है इस वक्त भी। जनूबी अफ्रीका के वेंडो डिसॉन जो है वो दूसरी और क्विंटन डी कॉक तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के इमामुल हक 5वीं पोजीशन पर हैं, जबकि भारत के विराट कोहली जो हैं वो एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए हैं। दूसरी तरफ जब बात करें ICC बोलर्स रैंकिंग में, भारत के मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए हैं और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग 8वीं पोजीशन पर चली गई है। ICC ने भारत के सूर्या कुमार यादव को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से और काफ़ी सारे फैनवेयर के साथ बड़े दुनिया के बड़े टॉप प्लेयर्स। और कहा ही जा रहा था कि अब तक के सबसे ज़्यादा स्टार स्टार्टेड पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेट बिकॉज PSL डज नॉट गेट अ विंडो लाइक द IPL डज। सो काफ़ी सारे खिलाड़ी अपनी मुल्की मसरूफियात की बिना पर PSL में जुज़वी या मुकम्मल तौर से शिरकत नहीं कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होता है। ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज ऑनलाइन होगा। इंग्लैंड के आदिल रशीद, हैरी ब्रूक, एलेक्स हेल्स, मोइन अली, जेसन रॉय PSL 8 में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज आ रही है। इसके अलावा दीगर 19 प्लेयर्स भी अपनी इंटरनेशनल मसरूफियात की वजह से टीमों को जुज़वी तौर से दस्तयाब होंगे। अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें तो राशिद खान इब्तदाई 3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। रहमान गुरबाज, फजल फारूकी कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसारंगा, नवीन उल हक और ओडीन स्मिथ के मुतबादिल प्लेयर्स का चुनाव करेंगे। पेशावर जल्मी, रोमान पाउल, मुजीबुर रहमान, जबकि मुल्तान डेविड मिलर और अकील हुसैन और टिम डेविड के रिप्लेसमेंट प्लेयर्स जो हैं वो भी चुनेंगे। आज होना है ये ऑनलाइन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। बिल्कुल जी, आज 7 बजे ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होगा टीम्स के लिए बार बार अपने कॉम्बिनेशन को इधर से उधर सेटअप करना। मूविंग ऑन फर्दर, ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को 4-3 से शिकस्त देकर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 12वीं मरतबा जगह बना। जर्मनी की बात करें तो जेरेमी हेवर्ड ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल करके टीम को जीत दिलाई और अहम किरदार जो है वो अदा किया उसमें। स्पेन ने इख्तितामी लम्हात में पेनल्टी स्ट्रोक ज़ाया कर दिया। दिफाई चैंपियन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली है। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और जर्मनी का मुकाबला इस वक्त जारी है और चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला होगा जनूबी कोरिया से। और बात करते हैं साल के पहले ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि अपने अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है और मर्द ख़वातीन दोनों जानिब जो है वो इस वक्त सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है वो आज आया है और सानिया मिर्ज़ा, जिनके बारे में हम जानते हैं दैट शी इज़ प्लेइंग हर लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, उन्होंने इंटरनेशनल बता दिया है कि जी बस ये उनका आखिरी साल है, अपने आखिरी चंद टूर्नामेंट्स खेलती हैं। शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द मिक्स्ड डबल्स। उनकी पार्टनरशिप है काफ़ी फेमस, एक अननोन नाम हम पाकिस्तानी में, रोहन बपन्ना के साथ। और एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले के बाद से थोड़ी देर पहले उन्होंने 7-6, 6-7 और 10-6 से जो है वो कामयाबी हासिल की। गुड लक टू सानिया मिर्ज़ा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो पोलैंड की मैग्डा मुरिया, चेक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नाउ दिस इज अ मेजर अपसेट इन वुमेन टेनिस। इसके अलावा बेलारूस की सबलिंका ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को हरा दिया।
अगर हम मेन सिंगल्स की बात करें तो एक जानिब जहां नोवाक जोकोविच लिटरली इस वक्त तमाम खिलाड़ियों को रोंदते हुए इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, वहां पे यूनान के सिट्सिपास जो हैं वो भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो या जी सवेरा, बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के बाद अब जब हम अपने मेहमान को खुशामदीद करेंगे तो अपनी मेहमान पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सबको कहानी पता है। फीफा के अनबैन के बाद जो है क्या क्या हुआ, किस तरह नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई, किस तरह क्या सारे सिलसिले जो चल रहे हैं। बट ये सिलसिले चलने के साथ साथ हमारी जो ख़वातीन की टीम है यानी पाकिस्तान फुटबॉल वुमेन टीम जो है वो चली अपने सफ़र पे और उस सफ़र में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फुटबॉल हमारी पाकिस्तान फुटबॉल टीम की कैप्टन मारिया खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो मारिया को हम खुशामदीद कहेंगे। एंड welcome to Game Set Match, Maria, and first of all, congratulations for a wonderful performance in the tournament. Thank you so much for having me. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Maria, walaikum assalam. You have got no idea how many times we have watched that goal in repeat. I mean, seriously, this is ridiculous. I mean, just take us through that. I mean, we'll talk about the team, we'll talk about everything, but please take us through that goal. What was going through the mind? Like, I have to shoot. Did you see the goalkeeper's position and stuff? Just please, if you could narrate those moments. Yeah, so first things first, I am left-footed. So that set piece on the right side, outside of the box, is actually something that I practice very often. It's one of my favorite set pieces to take in the entire game. So the second we were rewarded that free kick, I was like, all right, we're down 1-0. We really need to, seize this opportunity and take advantage. So when I put the ball down, again, anytime I put the ball down, anytime I'm taking a set piece, the aim is to just keep it on target. All right. Because if you keep it on target, whether it's back post, front post, center of the, whatever it is, at least you give it a chance. So I told myself, I said, Maria, keep it on target. Nothing changes. If you keep it on target, anything can happen. And that's what we saw. All right. And that was brilliant. That was like, it was one of a stunner. And everyone was expecting that you pass someone the goal and then, but you opted for it yourself, and it was a wonderful goal. Yeah. But Maria, talking about the coordination between the team, because we have seen over the period of time the way FIFA unbanned Pakistan Football Federation, and then you all gathered, and then this tournament started off. Was it difficult to have that chemistry and gel in? And was it difficult to gel in all these girls and captain this side? So we actually had our first international experience after the ban at the end of last year. And if you saw how we played in that tournament versus how we played in this tournament, and you can see some tremendous growth in so many of the players in such a short amount of time. The team that we had from the end of last year versus now is more or less the same team. So we have actually been together, we've been together more time than we have with our own families over the past few months. So I think the team, it's a young team, but the girls are extremely competitive, extremely supportive, and I think the team chemistry here is probably one of the best team chemistries that I've seen in my time. So really excited for our future, really excited for these young girls, and inshallah, we continue making the country proud. Inshallah. Maria, your match against Saudi Arabia was a critical one. Of course, Saudi Arabia, the women football, if I'm not mistaken, is a relatively newer phenomenon there as well. I mean, of course, they have got a pretty established men's football team. They did wonders. They beat the eventual champions, Argentina, in the FIFA World Cup as well. So tell us about the level of competition there. I'm pretty sure you would be up against a team, which perhaps not in terms of talent, but in terms of the facilities and the sort of the equipments that have been provided to them was definitely a step up for, I mean, compared to Pakistan would definitely have been a better side. But take us through the level, the difference in the level of talent between the two teams. Yeah, so first of all, the Saudi Football Federation did an amazing job hosting all four teams. The resources, the facilities, the ease of just
being there was amazing. I think it made everyone comfortable. It allowed all of the athletes, all of the staff to be able to perform at a high level just because they made things so easy. So definitely hats off to what Saudi is doing and how they're contributing to their women's football in the country. Right. As far as, you know, resources and everything goes, yes, it's very different to Pakistan. But I think what our girls did without having a league to play in Pakistan, without having access to 11-a-side football, without having, you know, access to high-level competition within the country, what our team did and what our coaching staff did in just 4 weeks, they prepared us for a high-level tournament, and we went out there and we competed. We took the game to every single team we played, and I think the girls and the coaching staff, all of us are extremely proud of what we accomplished in such a short amount of time. Amazing. And it was in such short of time. I believe we were not expecting such kind of a performance, but it was a wonderful performance by the women team of Pakistan football. But talking about the difference between all these three teams that you were playing against, let's talk about Mauritius. Were they more well apt and were they more well organized comparatively to Team Pakistan? Because obviously it is a very short time and we appreciate you guys, the way you guys have played. So Comoros, Mauritius, Saudi, they all have very different circumstances to Pakistan. Mauritius and Comoros were a lot more aggressive sides. Coming from Africa, they have a different style of play, so they were a lot more aggressive, so we had to play a certain style against them. And then Saudi are a lot more passing on the ground team. They like to keep the ball, they like to move the ball on the ground. So our style of play had to change against them. So throughout the tournament, you saw that our team the girls were smart enough and intelligent enough. Our coaching staff put together a tactic for each match, and we were actually able to play 2 different formations throughout the tournament. We were able to execute 2 different game plans, 2 to 3 different game plans throughout the different matches. So I think, you know, again, despite not having regular competition for women's football in Pakistan, it goes to show you the potential that our team has and that these young girls have, because it's very difficult during a competition to play a different formation, to play different, you know, style of play, and we showed that we could do both. Mario, if I look at the composition of the Pakistani squad, and in fact the playing 11 as well, the girls, they come from very different backgrounds. So you yourself, you have lived in US, there are players from the continental Europe and UK as well. And then of course there are players who have come from Pakistan and from some very underprivileged areas of Pakistan. So how difficult for you as the captain was it to coordinate between all these players? Was it a challenge? Did you really enjoy this sort of challenge that came up with this team, with this composition? So first of all, I think it's very important for the audience to know that in that starting 11, and even the team roster for that tournament, there were only 2 foreign players, myself and one other player that had come from abroad, whereas the rest of the team were Pakistani players living in Pakistan, training in Pakistan. So I think that is such an amazing thing to note, where, the team is not relying on foreign players to come in and perform, right? We have the talent, they're in the country, they're resilient. As far as, the girls coming from all sorts of different backgrounds, I think that's what makes our team so beautiful, is that we have players from everywhere in Pakistan. In my opinion, all of Pakistan is represented in this one team. Nice. You have girls from Hunza, from Gilgit, from Liari, like that is absolutely amazing. And, to your question about being able to, work with that kind of team, players coming from different backgrounds, I'll be honest, those girls are such an inspiration for me. The amount of resilience that I saw, the amount of hard work, the amount of dedication and commitment that I saw in these girls, it makes my job very, very easy. And Maria, do you think that a little bit of exposure, these girls can do wonders? Because the way you guys have played in this tournament, a little bit of exposure, more of training, more of facilities that they get. Because right now, I would say these girls were raw.
and the way you guys played there and the way you guys performed there, being with so much less facilities, if they'll get more facilities, they'll be wonderful. Absolutely. I think that's what I think the normalization committee is doing such a great job in doing for both men's and women's football, is they're ensuring that we are getting to play on a regular basis, getting us exposed to international competition on a regular basis. And that's how we're going to develop. That's how we're going to grow. And in parallel, you know, they are working on a strategy to be able to, you know, develop the women's game within the country. So providing a league, you know, and not just relying on one tournament a year to be able to say, hey, we're focused on women's football. So I think we're headed in the right direction. It is a marathon. It's not a sprint. You know, there's going to be ups and downs throughout this journey, but as long as we continue to support the team, support the federation, support the girl players, the male players, I think the potential that we see is tremendous. Absolutely. We're heading towards a break right now, but many of our audience, many of our might not know that she's from a very sportsman family. I mean, she's the niece of the great Jahangir Khan and the granddaughter of the great Hashim Khan, perhaps the most prominent squash family in the world. Hashim Khan, yes, of course, the most prominent squash playing family in the world. But Maria, squash क्यों नहीं खेलती, football क्यों खेल रही हैं? ये इनसे हम बात करेंगे इस break के बाद. Maria will be with us after this break as well. Don't go anywhere and keep watching Game Set Match. And welcome back to Game Set Match, in conversation with the captain of Pakistan women football team, Maria Khan. और डिस्कशन हमारी हो रही थी उनसे रिगार्डिंग दिस टूर्नामेंट, जो कि 4 नेशन टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया में खेला गया और पाकिस्तान ने सेकंड पोजीशन उसमें हासिल की. सो before going to the break, Adeel, you just I was asking Maria, I was asking you belong to perhaps the most prominent squash playing family in the world. I mean, your uncle Jahangir Khan, perhaps the greatest sportsman, forget squash, the greatest sportsman of all time. So this thing came to my mind. I mean, why not squash? Are you a good squash? You must be a good squash player, I'm pretty sure. So why didn't you take like squash professionally, or why soccer or football? Yeah, so it's a question my grandfather would ask me all the time. So growing up, where we grew up with Hashim in the U.S., access to squash was very difficult. It wasn't easily accessible. We would go to the club with our grandfather once a week. We would go hit the ball around. But again, as far as being able to train and get better at it and develop at it, it was very difficult at the time. And football and basketball was just something that was a lot easier to access. And so I started football at the age of 6 and just kept playing. Definitely did not think I would still be playing, but subhanAllah, I'm still able to. And that's just kind of how it worked out. My grandfather would always joke, though, about my squash game. He would say that my backhand was always better than my forehand. So that's something that I always remember. But definitely enjoy playing squash, but football has my heart. Yeah. Football has your heart, and football, you are playing such good football, and that is like a blessing in disguise for Pakistan team, because you are leading it right now. And talking about your uncle Jahangir Khan, he has something to say about you. What has he said? Let's watch and listen to that. कि जो परफॉर्मेंस जिस तरह के 4 नेशन टूर्नामेंट में रही है, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की किसी भी फील्ड की तरीके से अगर अपना नाम रोशन करती है और मुल्क का नाम रोशन करती है, तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है. और ये फैमिली के लिए ऑफ कोर्स हाशिम खान की ग्रैंड डॉटर्स हैं और फुटबॉल से शौक़ रखती हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रही हैं. तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरीके से लोगों ने स्पेशली इस गोल को जो अप्रिशिएट किया है, मैं समझता हूँ कि वो सबके लिए, हमारे लिए तो है ही, सबके लिए वो एक बड़ी खुशाइन बात है. और इससे वुमेन स्पोर्ट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जिस तरह वो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी मोटिवेशन भी होगी. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट.
Maria, I'm pretty sure your Urdu would have improved while playing with the lot of players of Pakistani origin. but just in case you could not decipher what's being said there, great Jahangir Khan was very proud of your achievement. He specifically mentioned about the goal that you scored. I mean, that goal became a sensation. Even the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, appreciated that goal, and what a moment of pride that would be. I think one thing that really stood out, Maria, in that match, I mean, that was the crowd support that was there in Al Khobar there. I mean, so many Pakistani turned up to support. Perhaps I felt there were more support for Pakistanis there than the Saudi side. Is that true? Yeah, honestly, it felt like a home. It felt like a home game. So I think in our final match, to be able to have such a crowd like that, it was extremely powerful. And I think it goes to show, you know, there is support, there is demand, you know, for football and Pakistani sports in general. And there are supporters everywhere. And, you know, we continue to try to make the country proud every time we step out on that pitch. Maria, we have seen your football talent, but communicating with the girls, with the team, how much Urdu have you learned? If you want to give some message to the girls watching you, not to lose hope. There's a lot in Pakistan sports, and yes, football is back as well in Pakistan. Anything that you want to say in Urdu? I will say it in Pashto or English, and then maybe you can translate it in Urdu. Whoa. All right. Say something in Pashto. So then, if you're going to put me on the spot, I'm going to put you on the spot to translate the Pashto. Yeah. Anyone among our team who can understand Pashto? Pashto, yeah. Because Sawera and I, we both can't. Okay, so you just guys give work the message on your Pashto, I'll work on my Urdu. Just give the message in Pashto and we'll just figure it out later. Yeah, no, I'll give it in English, and then that way it can be universal. I think for me, the main message is, again, to anyone out there, just find something you're passionate about, believe in it, believe in yourself, because you have to believe in yourself, otherwise nobody else will. When you find that passion, just continue to work hard and never take no for an answer. Wow, this is so amazing. Never take no for an answer, and that is really inspiring. But Maria, how much do you think you have contributed over the period of time in the lives of these girls? Because the kind of exposure that you have got, the kind of facilities that you have played all your life in, interacting with these girls who came from Gilgit, from Bihari, from these girls, how much of the contribution you had in their life? I think so. For me, this question is always interesting because I think it's the other way around. Okay. I think the way these girls have contributed to my life and have welcomed me with open arms and allowed me to come into their lives, better understand their situations. For me, honestly, they are my inspiration because the way these girls are able to work hard, and regardless of their conditions, regardless of their situations at home, or, you know, all of these girls are going through something, and just the simple fact that they show up every single day and work hard despite their challenges, for me, it's like I'm expected to be at a certain level because I have all of the resources, I have access to facilities and training, whereas these girls, nobody expects anything from them, and they continue to prove people wrong every single day. So for me, they are my inspiration, and they've contributed to my life. And honestly, I will forever be grateful for being welcomed by the country, being welcomed by these girls, the staff, the federation, everybody. Maria, thank you so much, and thank you so much for being such a wonderful inspiration for a lot of people here. Trust us, I mean, you are making a difference. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. जहाँ स्ट्रीमलाइन हुई पाकिस्तान फुटबॉल, आई होप मेंस टीम जो है अब उनको भी मौके मिले और उनको ऐसे मौके मिले कि वो लोग भी जाके जो है अपना टैलेंट फिर से दिखा सकें, टीम जेलन हो सके,
बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है अदील के अब ट्रैक पे जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल आ रही है, बिकॉज ये जो बीच में इतनी हिकअप्स आई उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब मतलब इधर से उधर तितर बितर हो गई थी पूरी टीम। अब वापस जो है हमने वुमेन फुटबॉल तो देख ही ली है, मेंस फुटबॉल में हमें देखना है कि किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। सवेरा, जो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी कभार हमको लगता है चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, चीज़ें अपने ट्रैक पर आ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान थिंग्स डू हैपन कि वो अचानक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाती हैं, कोई लीगल सूट फाइल हो जाता है, कहीं से स्टे ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल क्योंकि हम तकरीबन 1 साल हो गया ये प्रोग्राम करते हुए, वी हैव बीन फॉलोइंग, बाय द वे वी शुड हैव सेलिब्रेटेड आवर एनिवर्सरी शो। आई डोंट नो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, लेकिन एनीवे हम पाकिस्तान फुटबॉल की इस प्रोग्रेस को फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमें लग रहा है वो ये दैट थिंग्स आर ऑन ट्रैक, सो फार सो गुड। अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही रहे। So let's get back to cricket now. Exactly. और फुटबॉल की जहाँ आखिरी एक जो बात आप कर रहे थे, हमने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को फॉलो किया रेगुलरिटी में, हारून मलिक साहब को, खोकर साहब को, इन सारों के साथ एक आई थिंक गेम सेट मैच उस सफ़र में साथ रहा जब पाकिस्तान फुटबॉल की वापसी हुई और पाकिस्तान फुटबॉल की शुरुआत फिर से हुई। किस तरह फुटबॉल हाउस का जो हाल हुआ था वो भी हमने अपने शो पे जो है वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू क्रिकेट, और जब क्रिकेट की बात करते हैं सो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे डोमेस्टिक में इस तरह के हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं बट उनको नेशनल टीम से खेलने का मौका नहीं मिलता। एंड अब एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया एक कहते हैं कि एक जगह मिल गई है इन प्लेयर्स को। अमेरिकन क्रिकेट, USA इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन क्रिकेट। हमारे 2-3 खिलाड़ियों को पहले ही वो ऑप्ट इन कर चुके हैं, हमारे खिलाड़ी जा चुके हैं। अब एक और खिलाड़ी जो कि इसी कश्मकश में है या इसी सिलसिले में है इस वक्त कि वो शायद USA को रिप्रेजेंट करेंगे अब क्रिकेट में। साद अली ने गुफ्तगू की, खिज़र से क्या बात हुई, खिज़र आज़म के साथ साद अली की, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट ने एक से बढ़कर एक बल्लेबाज पैदा किया है और कहा यह जाता है कि जब ग्रीन विकेट्स होती हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ फंसे हुए दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ख़तरनाक और ग्रीन विकेट्स पर सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले डोमेस्टिक सीज़न सन 2017-18 में सैयद साद अली थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान कैंप के लिए कॉल किया गया, पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड गए मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। उसके बाद सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर साद अली ने रुख किया अमेरिकन क्रिकेट का, जिसकी विंडो आजकल बहुत ज़्यादा ओपन है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से क्रिकेटर्स को कॉल किया जा रहा है। साद, सबसे पहले तो जी जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड स्कोर किया है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, यादें तो होंगी दिल में अभी भी? बिल्कुल यादें तो हैं, मतलब डोमेस्टिक की तरह एक टाइम दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, 2007 से खेलो, अंडर 16 से, और फिर वर्ल्ड कप, फिर सारी चीज़ें। तो बस अफसोस तो बहुत था पाकिस्तान छोड़ते टाइम, मगर क्या करें, कुछ मजबूरियां थी, कुछ फैमिली रीजंस थे और डिपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था, और फिर टीम में रहने के बाद कुछ नहीं मिल सका, तो उसके बाद बिल्कुल ही अफसरदा हो के तो फिर इसीलिए डिसीजन लिया US जाने का। साथ आपके लिए ये कहा जाता है जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस आज बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड आज बैटिंग कर रहा है, आप उस वक्त किया करते थे, और जिस सीज़न में आपने स्कोर किया था रिकॉर्ड स्कोर, उधर तो उस वक्त तो बल्लेबाज जो है वो विकेट पे खड़े होते हुए भी डर रहे थे। पॉजिटिव क्रिकेट खेलता था, इस वजह से सरवाइव करता था डोमेस्टिक में। बस यही था कि उसके बाद जब टीम में नाम आया, टीम में रहे, उसके बाद मतलब सिर्फ बेंच पे बैठा रहा, ना कुछ मौका मिला उस तरीके से, ना कुछ दिया, ना कदर की गई, तो इसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो के तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार वहाँ से ऑफ़र थी मुझे मेजर लीग से, तो इस वजह से फिर मैं जाना पड़ा। कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपने वेट, पाकिस्तान टीम के लिए कितना वेट किया? आपने कहा कि लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली, यादगार इनिंग्स कौन सी है, कितना स्कोर किया, और क्या क्या यादें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपके जहन में? बिल्कुल, यादें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि एक अरसा पाकिस्तान डोमेस्टिक के लिए क्रिकेट खेली है मैंने, और 2012 का मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था अंडर 19, और उसके बाद 2019-20 या 21 तक मैं डोमेस्टिक खेलता रहा हूँ, कोई तकरीबन 8-10 साल मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो वो यादें तो बहुत सारी हैं, मगर ये है कि मेरे, अगर आप इनिंग की बात करते कि जो याद है वो मैंने फर्स्ट UBL डिपार्टमेंट में था, जिस साल टॉप किया था उस साल डबल 100 की थी अगेंस्ट PTV सियालकोट में, तो वो मेरी बेस्ट इनिंग थी।
वो एक यादगार है, क्योंकि डबल सेंचुरी मेरी एक ही डोमेस्टिक में। ऑफ़र आपको कब से हो रही थी और जब आपने सोचा जो है फाइनली डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रोज़ी रोटी तो क्रिकेट ही है आपकी? बिल्कुल, रोज़ी रोटी क्रिकेट है। और मुझे ऑफ़र जो है वो मैं जो लास्ट सीज़न खेल रहा था जब, तो उस दौरान मुझे आ गई थी कि मतलब हम इंटरेस्टेड हैं, और मैं इंग्लैंड में था, इंग्लैंड लीग खेल रहा था, तो मुझे वहाँ पे कॉल आ गई थी और सब कुछ हो गया था कि उन्होंने सब बता दिया था कि हम इंटरेस्टेड हैं आपको साइन करने के लिए, तो आप देख लें आपने क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनको बग़ैर किसी झिझक के मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके बाद मैं पाकिस्तान आया वापस। मैंने वीज़ा मेरा उन्होंने भेज दिया था सारा, वर्क वीज़ा जो भी, वो मैंने अप्लाई किया और मैंने सीधा 1 महीने के बाद मैं वापस। यहाँ से आप किसी ने कहा नहीं यार आप रुकें, आप हमारे प्लान में हैं? किसी ने भी नहीं पूछा ना आज तक, ये कि मतलब मैं 1.5 साल में हो गया मुझे यूएस में, आज तक किसी ने ये भी नहीं पूछा यार तुम हमसे बात तो कर लेते, बता देते कि क्यों गए, क्या हुआ, क्या ऐसा मसला। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय मैंने सिर्फ अपने घर वालों से मशवरा किया था और उसके बाद आज़म भाई से, 2 लोगों से मैंने, क्योंकि आज़म भाई से समझे क्रिकेट में मतलब मुझे एक तरीके से सारी जो क्रिकेट की दुनिया है वो आज़म भाई ने दिखाई है कि कैसे खेलना है। वो मेरे कोच, उन्होंने भी बोला था कि ठीक है तुम जाओ। यूएस में क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो बेशक आप नाम नहीं लें, मगर आपको अंदाज़ा है कि यूएसए से इस वक्त पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कितने क्रिकेटर्स को? प्लेयर्स तो आप यकीन करें पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जो आना चाह रहे हैं, मगर ये है कि अब वहाँ पे हर किसी का थोड़ा सा इशू है, और कुछ ये है कि अब कंपनी ने लेना बंद कर दिए प्लेयर्स। तो प्लेयर्स तो बहुत आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजर लीग अनाउंस हो गई है, और मेजर लीग की जो डेट है वो 13 जुलाई तो 30 जुलाई है। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वहाँ का लोकल डोमेस्टिक इवेंट है, जैसे PSL है या IPL है, तो वो उसी लेवल का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है मेजर लीग। तो वहाँ पर क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना? फ्यूचर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा देख रहा हूँ वहाँ पे, और 24 वर्ल्ड कप से पहले एलिजिबल हो रहा हूँ। बाकी ये कि नसीब में होगा तो US के लिए ज़रूर खेलूँगा। और साथ साथ किन किन लीग्स के दरवाजे आपके खुले हुए हैं और किसकी ख्वाहिश है कि आप उधर से खेलें? लीग्स तो मतलब बात चल रही है काफ़ी जगहों पे, BPL था इस साल, या नेपाल लीग थी, उधर बात हो रही थी, मगर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। मगर ये कि इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में ये कि आपको देखूँगा खेलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद साद अली हमारे साथ मौजूद थे, और बात यही की जाती है कि हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर उस तरह से आते नहीं हैं, और अगर जो आ रहा होता है उसको मौका नहीं दिया जाता। साद अली इस वक्त एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिसने ज़बरदस्त स्कोर किया, मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, और वो पाकिस्तान छोड़कर अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि हम बांट रहे हैं टैलेंट। इस वक्त समी असलम भी हमारे एक प्लेयर जा चुके हैं US क्रिकेट के लिए, और साद को तो आपने सुन ही लिया कि साद जो है पिछले 1.5 साल से वहाँ पे मौजूद हैं। अदील, हम कहते हैं टैलेंट नहीं है हमारे पास, पर ये टैलेंट हम इस तरह बांट रहे हैं। मैं अभी इनका यही रिकॉर्ड देख रहा था, एंड साद हैज अ लिस्ट A एवरेज ऑफ 44 पॉइंट समथिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86। और मैं ये एक और भी चीज़ देख रहा था, न्यूजीलैंड के जिस दौरे में शाहीन शाह अफरीदी को पहली बार ले जाया गया था, ही वाज अ पार्ट ऑफ इट। अल्लाह की बहरहाल दी प्रोग्राम खत्म करने का अब हो गया है टाइम। इंशाल्लाह अदील और सवेरा आपकी खिदमत में कल एक बार फिर हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।